स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। आर्टिकल 370 की मनसूखी का मामला सुप्रीम कोर्ट में दूसरे रोज की समाअत शुरू। मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत शुरू। 370 की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्तें। सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश कर रहे हैं अपना मौक़िफ़। Gives power to Parliament to enact law? No. It limits the power of Parliament to enact law to a certain extent. But I was trying to explain what Yes. the Lord put to me. Please allow me. But Yes. what I was trying to say was that here, what the clause says is that where the lists in the instrument of accession, right? Parliament may make a law, but that will be in consultation. It's a double limitation, Mr. Sibbal. See, the first limitation is, the Chief mentioned, power of Parliament to make laws for the state can be limited to. Yes. What is it limited to? To matters in the union list and concurrent list. So, first part is matters in union and concurrent. Correct. But second qualification, which in consultation with the government of state, there also you are right, to that extent you are right, it is in consultation with government of state, are declared by President to correspond to matters specified in the instrument of accession. Correct. Governing the accession of the state. Correct. So such parts of union list and concurrent list, which form a part of the instrument of accession, because everything else doesn't form a part of instrument of accession. The whole list doesn't. Right. To that extent, Parliament can enact law. Parliament is limited to enacting laws in respect thereof in consultation with the government. Absolutely. That's how that's what I'm saying too. But they are not, at that moment the law is not made, they are only saying the contours under which Parliament will enact a law. The contours with respect to instrument of accession are those four items: communications, defense, external affairs and ancillary, which I showed to your lordship the schedule. When it comes to B2, the contours again of the items in the concurrent list over Parliament may make laws. Again, it doesn't say that law is made. It only delineates the contours. Therefore, I'm going to now distinguish it from D, Malad. That's how I'm let's come to D. How would you? I'm just coming. Yeah. Then you come to see the provisions of 1 and of this article shall apply in relation to that state. That's not covered. That's not covered. Right. So that's Malad's. 1 is integration into India, and Malad's, the other is Article 370. Now come to D. Such of the other provisions of this constitution. Now we are not talking about lists. Now we are not talking about lists. We're talking about preamble. We're talking about 356. We are talking about fundamental rights. Each of those orders require the concurrence of the state. I'll show that to your lordship. Here it is such of the other provisions of this constitution. 371B doesn't talk of any other provisions of this constitution. It talks of the instrument of accession and the concurrent list, the contours of the power. When you come to other provisions of the constitution, these may be made applicable. That's why the order. Now let's read it further. Such of the other provisions of this constitution shall apply in relation to the state, subject to such exceptions and modifications as the president may order set specify, not referred to 371B. There's no order, no question of order there. It's only the contour of the power. Now read, provided that no such order, that is no such order relating to D, which means provisions of the Constitution of India to apply to Jammu and Kashmir. No such order which relates to matters specified in the instrument of accession referred to in paragraph 1 of clause shall be issued. Kindly note the word issued. That's the difference between 371B and 371D. Because no orders are issued under 371B. That's the power to make law. That's only the contour of the power. Your lordship asked जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की समाअत शुरू हो गई है। 370 हटाने के खिलाफ दायर कुछ अर्जियों की पैरवी करने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल आज भी अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं।
कपिल सिब्बल को आज दोपहर तक का वक्त दिया गया है। चीफ जस्टिस D.Y चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस पर फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन इससे पहले इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और अपोजिशन जमातों ने इस मुद्दे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सभी पार्टियां इस मुद्दे को अपने हक में भुनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। पहले रोज दफा 370 की मनसूखी पर अपना मुद्दा या अपनी दलील रखते हुए कपिल सिब्बल का कहना था कि हम यहां इस बुनियाद पर खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इंज़िमाम था और हमेशा रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आईन हिंद को नाफिज करने के अहकामात सादिर होते रहे हैं। दफा 370 के हक को छीनने का कोई जवाज नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले वकला में से एक मुजफ्फर इकबाल खान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा था कि हमारा मानना है कि आईन साज असेंबली के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, जबकि पार्लियामेंट के पास नहीं है। मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गुलाम नबी आजाद की कोई दरख्वास्त नहीं है, यानी DPAP के जो सदर है गुलाम नबी आजाद, उनकी कोई दरख्वास्त नहीं है और कपिल सिब्बल नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उस वक्त उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों ही घर में नजरबंद थे, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP अकबर लोन और MP हसनैन मसूदी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। कपिल सिब्बल अकबर लोन की दरख्वास्त पर बहस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मुजफ्फर इकबाल खान। किस तरीके से किस चीजें देख रहे हैं और किस जहत में आगे बढ़ रहे हैं? कपिल सिब्बल साहब ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल उन्होंने पूरे कंप्लीट अभी नहीं किए हैं आर्गूमेंट। वो एक आध दिन और लग सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं गोपाल सुब्रमण्यम साहब, वो स्टार्ट करेंगे। जो आर्डर हमने दिया हुआ है, नोडल जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ है कोर्ट की तरफ से ही, तो उम्मीद है आज कल तो बहुत अच्छे माहौल में आर्गूमेंट चलते रहे। आज भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और बहुत बड़ा इशू है। मेरे ख्याल में तारीख में आफ्टर केशानंदा भारती एंड आफ्टर SR बुमई ये सबसे बड़ा मामला है। अगर देखें तो जिस तरीके का जो बुनियादी बात है, दस्तूर साज असेंबली, पार्लियामेंट, ये इसके इर्द गिर्द जो आर्गूमेंट हो रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है और इसको किस तरीके से तय करने की जरूरत है? देखिए, वो तो अब सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह लेता है। जो हमारा मानना है एज लॉयर की अपनी दलील है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। फाइनली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यू लेना है, हमारा यह है कि जो आइन साज असेंबली है उसकी पावर्स पार्लियामेंट इख्तियार नहीं कर सकती। आइन साज असेंबली की पावर्स अनलिमिटेड हैं, पार्लियामेंट की पावर्स लिमिटेड हैं। तो अब ये देखते हैं इसको कैसे लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है। एक खबर ये भी चलनी शुरू हुई कि कपिल सिब्बल साहब जो पहले खबर आ रही थी कि NC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब की यहाँ कोई पिटीशन है नहीं। शायद आपको याद होगा कि जिस वक्त ये पिटीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आर्गूमेंट जिसमें कपिल सिब्बल कर रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की पिटीशन है। उस वक्त हमारे जो पार्टी के दोनों लीडर हैं फारूक साहब और उमर साहब, वो अरेस्ट थे, वो एफिडेविट फाइल करने नहीं आ सके थे। उस वजह से हमारी पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं अकबर लोन साहब और ऑनरेबल जस्टिस मसूदी साहब, उन्होंने अपने नाम पर ये पिटीशन, ये बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन है जिसको कपिल सिब्बल साहब आर्गू कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि आजाद साहब की तरफ से है, तो आजाद साहब की ना तो यहाँ कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन है और ना ही कोई पिटीशन है। सिब्बल साहब ने जो कल आर्गूमेंट स्टार्ट किए वो अकबर लोन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों MP जो हैं वो पार्टी हैं। आज की जो पूरी बहस होने वाली है, जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या बुनियादी तौर पर इसको आप देखते हैं कि कितनी लंबी चलने वाली? लंबी तो ये चलेगी, अब किस तरह बढ़ेगी वो तो अभी एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है कि भाई ऑनरेबल कोर्ट्स की अपनी क्वेरीज हैं, लॉयर्स की जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तो किस सिमत में जाएगी ये तो नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन आर्गूमेंट तो अभी चलेंगे, अभी टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुजफ्फर इकबाल खान जो हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर 2 बातें कही हैं कि आइन साज असेंबली का जो आर्गूमेंट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि आइन साज असेंबली की
जो इख्तियारात हैं उसके जो हदूद हैं वो लामहदूद हैं, जबकि पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं वो महदूद होते हैं। दूसरा, इन्होंने बड़ी बात कही कि गुलाम नबी आज़ाद को कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। Constitutional practice may seem to support what Mr. Sibbal is saying. One is that D refers to the fact that other provisions of the Constitution may apply such Other than 1 and 2. 1 and Such of the other provisions of this Constitution shall apply in relation to that state, subject to such exceptions and modifications as the President may by order specify. In other words, if you are making exceptions or modifications, that's one construction. That if the President is making exceptions or modifications, then if it relates to a B1 subject, then you require consultation with the state. If it relates to something other than a B1 subject, you require consultation of concurrence of the state. All right? So it is only where you are making exceptions or modifications in the Constitution that it requires either consultation or concurrence. The other interpretation is that even if you are not... और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।